Assalamu alaikum. Hello guys. This is Yunus from Air University Islamabad. Okay, I will be telling you all about the smart sensors that you see. The sensors are voltage, current, and the SD card, and the RTC, which is real-time clock. The SD कार्ड जो है वो लाइक करंट और वोल्टेज के वैल्यूज को स्टोर करेगा विद बीइंग आरटीसी। उसके साथ जिस इंस्टेंट पे वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो साथ स्टोर करवाएगा एचडी कार्ड के। ठीक है, ये पर्पस है और रियल टाइम क्लॉक का। दिस वन इज़ अ वर्चुअल टर्मिनल जो कि हमारी वैल्यूज डिस्प्ले करवाएगा, एंड द क्लॉक यू सी हेयर इज़ वो बेसिकली मोटर की फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले कराएगा। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर यू सी अ सिंपल ऑक्टो कपलर जो कि एक बटन के साथ अटैच्ड है, विच नीड्स टू बी पुश डाउन इन ऑर्डर टू वर्क। सही है। जब ये बटन पुश डाउन होगा, सही, तो ये आई ओ बी पे एक हाई सिग्नल जनरेट होगा, एंड द सेम टर्मिनल विच इज़ अटैच्ड ओवर हियर, वो टर्मिनल हाई वैल्यू यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा, विच विल कॉन्सिक्वेंटली मेक द होल सर्किट एक्टिवेट। ठीक है, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये IO2 विच इज़ अ टर्मिनल ऑफ आर्डुइनो, ये कोड ये जाके एक कोड इस तरीके से बना हुआ है कि लाइक IO2 पे जब हाई सिग्नल जाएगा तो ये IO13 को एक्टिवेट करेगा, विच इज़ ऑल्सो विच इज़ कनेक्टेड टू दिस IC, सॉरी। ठीक है, ये IC से कनेक्टेड है। ये IC है ULN2803, दिस इज़ अ डार्लिंगटन पे IC। और जब ये एक्टिवेट होगी, क्योंकि IO13 पे हाई सिग्नल रिसीव हुआ था, तो ये इस सर्किट को एक्टिवेट कर देगी, जिसके थ्रू मोटर स्टार्ट होगी। मोटर जो है एग्जॉर गेट से कनेक्टेड है टू द फ्रिक्वेंसी काउंटर। ओके, एंड दिस वन इज़ द दिस वन, ये पूरा सर्किट जो है दैट विल वर्क एज अ वोल्टेज डिवाइडर। सही है। एंड यहाँ पे ADO जो है पिन, उस पर आउटपुट जनरेट होगी जो कि आर्डुइनो से कनेक्टेड है। देन द करंट सेंसर, दिस इज सर्किट ऑफ द करंट सेंसर विच इज़ आल्सो कनेक्टेड टू द मोटर, और ये वो करंट मेजर करेगी दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द motor. And the sensor used here is ACS712, and as mentioned on the IC, ये 7 पिन जो है वो AD2 पे आउटपुट जनरेट करेगी, which is directly connected to the IC, the Arduino. ओके, और फिर यहाँ पे SD कार्ड है। सही है, SD कार्ड की भी आउटपुट IO10 टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो कि ऑब्वियसली कनेक्टेड टू द आर्डुइनो है, एंड दिस द सर्किट ऑफ रियल टाइम क्लॉक। दैट्स ऑल अबाउट द हार्डवेयर। नेक्स्ट I will tell you about the source code, basically the functions that make these sensor work. So over to the sensor source code. Okay, so now we start with the codes that are making the project run. The first four, this and these four other libraries जो कि इंक्लूड की हुई हैं। सही है, और ये RTC की लाइब्रेरी है जो कि प्रोटियस के लिए है। देन हम लोग जो पिन्स हमने सेलेक्ट की हैं, ये पिन नंबर्स असाइन हुए हुए हैं बटन को, LED को, और चिप को, SD कार्ड चिप को। और ये एनालॉग पिन्स हैं जो कि हमें इनपुट देंगी वोल्टेज एंड करंट के लिए। दीज आर द वेरिएबल्स, और वैल और रॉ ये टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं जो कि असाइन हुए हुए हैं। और ये बटन स्टेट जो है, ये पुश बटन जो कि स्टार्ट में जो हमने प्रेस करना होता है
टू रन द आर्डुइनो, उसके लिए ये फंक्शन है, उसका स्टेटस रीड करने के लिए. और इफ़ इट्स ज़ीरो तो वो वन रन करेगा, अदरवाइज इट वोंट. अच्छा, ये सेटअप में दिस 9600 होता है टू इनिशलाइज द कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर. ये वर्चुअल टर्मिनल की बाउट रेट भी है 9600. Then these are the two functions which we will define later, SD int or RTC int. Then uh, ये जो पिन से हमें आउटपुट हों मिलेंगी वो एलईडी है एंड बटन है, और जो पिन्स पे इनपुट आएगी from the amp meter and voltmeter, that is voltage and current. These are the inputs to the Arduino. और ये भी आउटपुट्स है तो ये आर्डिनो आउटपुट देगा. ओके, देन लूप में हम RTC अप का फंक्शन डिफाइन करते हैं. इसमें ये कंडीशन स्टेट हुई हुई है कि इफ़ द बटन स्टेट इज़ हाई मीन्स इफ़ इट इज़ प्रेस्ड देन टर्न द एलईडी ऑन, जो कि राइट साइड पे बिल्कुल आर्डिनो को राइट बॉटम राइट पे प्लेस है. Then if the LED pin is high, it will turn on the LED and then it will start printing this motor current overload, and the delay is currently set to 1000. ये actually delay है between displays में. Else if the LED is low, then it won't start. लाइक अच्छा, और हमने वोल्टेज की ये 0 and 20 जो है ये डिफाइन यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, और 1023 इज़ द बिकॉज के आर्डुइनो जो है वो डेसिमल बेस सिस्टम पे कोड हुआ हुआ है और यू कैन से सेट हुआ हुआ है, तो उसकी ये वैल्यू है. तो हमने 0 to 20 हमने खुद डिफ़ाइन किए हैं. देन वो ये बैटरी वोल्टेज प्रिंट करेगा. इट विल have a delay of 1000 milliseconds. Then similarly ये current pick करेगा from the voltmeter. और जो current है वो मेजर में जाके स्टोर हो जाएगा एंड वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे. ये मेजर में जाके करंट स्टोर हुआ एंड देन प्रिंट हो गया. देन माई फाइल जो है वो sd.open की इक्वल है. ये माई फाइल फंक्शन नेम है जो कि कोई भी हो सकता है, आप उसको आप कुछ भी रख सकते हैं. देन इफ़ द फाइल इज़ ओपन तो हमें ये टेस्ट टेक्स्ट है विच विल बी शोन टू अस सो दैट वी नो के SD card is in place or it's working. Then or if the file isn't open or it is closed, वो error print कर देगा, error opening daq.txt, which will show कि there's some problem with the SD card. Then okay, अब ये get current जो हमें एम्प मीटर के थ्रू रिसीव होगा उस फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं. ओके, बेसिकली हम में जो एम्प मीटर रिसीव होगा वो एक एवरेज वैल्यू भी है, वो एक एवरेज वैल्यू है क्योंकि वेरिएबल करंट्स मतलब कुछ डिफ्लेक्शंस हो सकती हैं जो कि हमें रिसीव हों. तो एक हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देने के लिए, एक रीजनेबल वैल्यू देने के लिए हमने ये एवरेज का फार्मूला राइट किया है. देन वी मूव ऑन टू SD int which is another function. Okay, this will print initializing SD card. Okay, this pin 10 means ये pin SD card के out से connected है, which is the pin number of Arduino. And if there is no signal at this pin, if pin number 10 पे,
तो वो एक एरर प्रिंट कर देगा, इनिशियलाइजेशन फेल्ड. देन अदरवाइज इफ़ इट्स इन प्लेस, वो इनिशियलाइजेशन डन का मैसेज प्रिंट कर देगा. देन ये है हमने एस डी कार्ड की फ़ाइल ओपन होती है तो वो हमें टेस्ट शो करा देगा कि दैट एस डी कार्ड की फ़ाइल प्रिंट हो रही है. ये तब होगा ओनली इफ़ एस डी कार्ड प्रॉपर 10 पिन को सिग्नल देगा, अदरवाइज़ ये टेक्स्ट प्रिंट नहीं होगा. विच कैन बी शोन, विच यू कैन सी ओवर हियर कि ये एरर ओपनिंग DAQ.test होगा. एल्स का फंक्शन लगा हुआ है if the above condition is not fulfilled. सही. एंड ये अब ये एस डी कार्ड फाइल जहाँ पे सेव होगी और क्या रीडिंग सेव होंगी वो उसका फंक्शन है. इसमें भी सेम एक कंडीशन लगी हुई है विच से इसके एरर ओपनिंग DAQ.text. देन RTC जो रियल टाइम क्लॉक है उसका फंक्शन है इफ़ ये इस पर्टिकुलर कोड का ये मीनिंग है कि इफ़ द RTC isn't running so it will show a print it will print an error stating RTC is not running. Otherwise ये आपके जो कंप्यूटर में जो टाइम है वो पिक करेगा and it will show that on the virtual terminal. Okay, so now we move on to simulation. First of all हम इंश्योर करते हैं कि this button is pushed down so that the whole circuit works. Okay, uh, so we're gonna play the simulation. We will wait कि जब तक LED येलो हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, that means कि ये वैल्यूज़ पिक करना स्टार्ट करेगा. Slowly in a few seconds वो LED will turn on. It takes a bit time but ये अभी हो जाता है. अभी आप ये भी चेक कर सकते हो since the LED is not on, no readings are shown here क्योंकि nothing is working on of the circuit. अब you can see कि ये since the LED has been turned on, it is giving us a voltage 8.46 and amperes. let me zoom in. Okay, ये वोल्टेज और ये हमारे पास करंट शो हो रहा है विच इज़ ऑफ द मोटर. 8.46 is this voltage and 3.93 is the current. ये दोनों parameters are of the voltage. This frequency is of the motor. Okay, and अब now अगर हमें वेरी करना है वोल्टेज को तो we can slide it down towards the end. अब you can see voltage has risen up to 9.06. अब इसको हम slowly decrease करेंगे. It is maximum, तो ये अब ये 84 पे है. You can see slowly it's decreasing but एम्पियर 0 है तो हमें इसको 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं देना. तो what we gonna do is हम इसकी रेजिस्टेंस को और डिक्रीज़ करेंगे.
ताकि ये आइडल कंडीशन पे वर्क कर सके. लाइक अब मैंने इसको 55% कर दिया है. अब यू विल सी वोल्टेज एंड करंट will start to show up. Like current has is being generated. और अब आप देख सकते हैं कि both the parameters are being measured and they are also being written to the SD card, जो कि confirm हो रहा है by this sentence or writing to daq.text. Okay, so this is all for the smart sensors. इसमें basically I showed you how to sense current, voltage, how to write those values on the SD card, and how can real-time clock be used when measuring these parameters. This real-time clock is incorporated into the Proteus through coding, as I showed you over here, and this is the circuit working in perfect condition. Thank you. Okay, the part B of the video is actually मेरा project था solar tracking sensor, which means कि I had to track the solar signals being emitted. Okay, or that light could be from a bulb or from anything, right? Or like basically हमें एक illuminant था जिससे सोलर लाइट निकल इमिट होती है, और हम उसको ट्रैक करके हमारा मॉडल मूव करता है. तो फॉर दैट आई हैव यूज्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, sorry, I've used an ultrasonic sensor and a temperature sensor, which I will show you later on. Okay, this one is an Arduino. This one is the same voltage sensor circuit. This is the current sensor circuit. This is the virtual terminal. And this is the liquid crystal display, which is LCD. Okay, fine. So first of all, after designing all the circuit, हमने क्या करना होता है. बेसिकली हमें जो Arduino का जो हमने कोड लिखा होता है, इसको हमें कंपाइल करना होता है, विच कैन बी कंपाइल्ड बाय क्लिकिंग दिस टिक बटन. इसको जब हम कंपाइल कर लेते हैं तो हमें बेसिकली इसकी जो हेक्स फाइल होती है, जो कि इस तरीके से एक्सेस हो सकती है, विच आई एम शोइंग यू नाउ. रन लिख के एंड देन यू कैन टाइप ऑन दिस थिंग. व्हेन यू प्रेस ओके, you have to search .hex to get that file. This file can be seen over here. आपने क्लिक करना है इसको Proteus को. Then you have to copy this very particular address. You have to go over here and you have to put this location in that property, in this program file. ये basically ये file this address will tell Arduino which hex file to access. And इस address को complete करने के लिए हमने ये remaining name भी print इस पे paste करना है. After I pasted, you have to press OK. आपने OK press किया. Okay, the file has been saved into the Arduino. Okay, so basic know-how about the ultrasonic sensor that I have used. Okay, it has 4 pins, a 5 volt pin for the supply. It's a trigger and echo, जिससे एक trigger and echo वो 2 pins हैं जिसके थ्रू आप AC controller attach कर सकते हो, which is this one, and इस और एक ground है. Okay, this one is connected to the ground. और ये signals
This is the picture. This is the real picture of the sensor that I use in the Proteus. It's also shown over here कि VCC जो है जिस the power supply वो positive power supply, trigger pin, echo pin and ground. तो basically इसका पर्पस ये होता है कि ये ट्रिगर पिन जो है ये रेज एमिट करता है, टारगेट को रीड करता है एंड टारगेट से जो रिफ्लेक्टेड बैक रेज होती हैं उसको डिटेक्ट करता है. तो जो डिस्टेंस एंड द टाइम होता है उसके थ्रू वो कैलकुलेट करता है हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज. ओके, एंड दिस sensor can be is able to measure accuracy from 2 cm to 400 cm. ये इसकी capability है to measure the distances, how far the object is. If the object is further than 400, it might not be able to detect it. And this is the circuit diagram, and it shows how to connect it with the Arduino, which is the same one जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था. Right, this is Arduino, this is real time clock, this is the liquid crystal display, and these are the other information which might be useful to you. Or like this is the code, but ये code मैंने नहीं, ये वाला code मैंने नहीं लिखा. This is from the internet. My code is a bit different. Okay, इसकी डेटा शीट भी आपको easily available है. You can find it by writing this number 8CSR04. Actually I couldn't find it, I don't know why, मुझे नज़र मिल नहीं रही थी, but you may be able to find it. Okay, then back to the Proteus. Now I'm going to simulate and show you how is this working, like what parameters is this measuring. If you will play the play button, it says the code has initialized, this is my name, and look, as you can see, it is measuring the voltage plus the current. The current is it's 0.9 amperes, it shows here, and the voltage is 2.15 volts, which is also the same over here. And this reading, which is 309 inches and 790 centimeters, is of the ultrasonic sensor. Like अगर आपने इसको चेंज करना है और आपने इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की रीडिंग्स को थोड़ा बहुत चेक करना है तो आप इसको रियोस्टेट से कर सकते हैं. एंड सिंस आई एम डूइंग इट, आई एम डिक्रीजिंग द परसेंटेज. यू कैन सी इसके ये पैरामीटर्स ये चेंज हो गए. It's now 244 inches, 623 centimeters. So yeah, this sensor is working right now, and this is the clock. अगर आप चाहते हो, if you want to change this time and set it according to your desire, you can do that with these two buttons. ये buttons time and date की setting के लिए हैं. This is also the real time clock. This one is showing the same seconds, and it shows the moment, it starts the moment the simulation is started. Okay, so this is the ultrasonic sensor जो कि आपके डिस्टेंस को मेजर करता है. I have also added a current sensor which I have already shown you, और एक voltage sensor भी. So all three sensors are connected to the Arduino and they are measuring the values. Or if you wanted to save these values in the SD card, आप already आपको मैं earlier बता चुका हूँ that can also be done. Okay, fine. So this is now working.
and I'm stopping. And don't forget to put this put ultrasonic hex file into the sensor. This is very important, otherwise it won't work. You have to put this hex file into this hex file will make it working, or it will you have to put hex file in this Arduino. This hex file is of the Arduino code. This hex file is already available on the internet. You just have to download it and place it over here. This is the most you have to do for this sensor. Otherwise, for this Arduino, you have to code it, you have to compile it, and then add the hex file into this. This is all for the ultrasonic sensor. Okay, so the next sensor that I was supposed to show you was this temperature sensor. This one is used to know कि क्या heat receive कर रहा है हमारा solar panel सही, और it can used as a safety device as well to know कि हमें इसको कितनी देर on रखना है so that it doesn't get burned. तो ये temperature sensor हमने इसलिए यूज़ किया हुआ है, basically measure the heat and to tell us the temperature of our model. Fine, so this is the temperature sensor plus a pressure sensor. BMP180 is the model number. It can give us temperature, pressure. It has 3 pins. One is serial clocks, the other one is serial data, and this one is for the power supply. I will tell you later why I used this particular 3.3 voltage. Oh, these pins, these 5 and 6 pins are connected to the Arduino, right? And this is the virtual terminal which will definitely show us our values. Okay, so here's about the BMP180, the pressure sensor, and the pressure and temperature sensor that we are using. This is its physical picture. How is it in reality? So these are the operating temperature. It works at full accuracy on from 0 to 65 centigrade. This is conversion time temperature. The serial data clock has maximum 3.4 megahertz frequency. The standby current is typical 0.1, and the peak current during conversion ranges from 650 to 1000. Okay, and this is the block this is a block diagram of the sensor. This is how the sensor looks from the inside. This is the I2IC interface, which is Arduino in our case. This is the display, and this is the circuit resistors that can be used to make up the whole temperature sensor. And it also shows the data sheet has also mentioned that it works at 3.3 volt with full accuracy. This data has been given in the data sheet that the sensor will work with full accuracy when the voltage supplied is 3.3. तो हमने इसको इसीलिए 3.3 वोल्टेज रखा है ताकि हमें फुल एक्यूरेसी अचीव हो, राइट? अब हम अच्छा इसकी ये 3 पिन्स थी, राइट? Normally they are 5 pins, but the other 2 pins are not necessary, but ये 3 pins हैं जो कि necessary हैं to make it workable with Arduino.
राइट, अब हम इसको प्ले करेंगे. ओके, या आई नो वेयर द एरर इज़. हमने यहाँ से इसकी सेम लाइक जैसे हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर में की थी, वी हैव टू ऐड द हेक्स फाइल. we will we will do the same procedure. This is the code, right? This is the complete code, not a long code but an easy code है इसका. राइट, दिस इज़ द आर्डिनो लाइब्रेरी जो कि आपने बिफोर हैंड इंस्टॉल करनी होगी विद कोड कंपाइल करने से. आई हैव डन कंपाइलिंग, यू कैन ऑलरेडी सी. और लाइक अब मैं इसको इसकी फाइल लोकेशन को एक्सेस करूँगा एंड आई विल देन add it in the Arduino. You have to dot hex search किया, you can see the hex file has been generated. Yeah, properties open की, you have to first copy this one. आपने ये कॉपी किया सही है, फिर Proteus में आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया. राइट, आपने फॉरवर्ड स्लैश रखा, देन आपने इसका जो ये रिमेनिंग नेम है ये कॉपी करके you have to paste it over here. Now the whole program file address is complete. अब आपने इसको OK करना है and this is ready to work. And I like to add one more thing कि हमने पिछले अल्ट्रासोनिक सेंसर में इसकी हेक्स फाइल अल्ट्रासोनिक सेंसर में हेक्स फाइल ऐड की थी, but here this isn't necessary क्योंकि this one is already added into the Proteus library, or like it doesn't require the hex file. So yeah, we're gonna play it. और like simulate हो रहा है. It shows code initialize, code has started. It is just telling the temperature, the pressure, and this real altitude is ये वो है जो कि सी लेवल के अबव है. राइट, तो it is sort of better than the other temperature sensors क्योंकि ये हमें ये प्रेशर भी दे रहा है. So it has an edge over others. बाकी that's it for the temperature sensor. That's all you need to know. Okay, thank you so much for watching this, and I hope you got to understand something. Thank you so much.